now. Okay, perfect. I hope my screen is also visible. Yes, it's visible. Okay, great. So, hello everyone. This is Anupam from Flipkart Advertisement team, and it's great to be part of this meeting. And I will be helping you guys to go through one of our recent launch product, that is the budget rule feature, and will help like how it is going to help us in solving our day-to-day problem which we face by like parking our campaigns, and sometimes if there is a weekend and we miss to park or add some additional budget in our campaign. So we'll go through it each and everything and how it is solving those that problem for all of us, right? So I will be taking this meeting in both language, so that everyone can understand it better, English and Hindi. So जहाँ पे भी जिसको कोई अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो there will be a Q&A session also. You can put your questions there and we will take it one by one. ठीक है? So let's begin the session today. So budget rule is basically like obviously it is intention of this budget rule is कि आप इसको लगाओ और आप टेंशन फ्री हो जाओ and एक बार लगा करके so that it will automatically happen. So we actually intend to automate things जो भी हमारे campaigns है उसको हम कैसे automate कर सकते हैं for all our sellers. This is the basic intention behind this specific product. So now comes like what is budget rule? So budget rule is basically is the tool which can help you in managing your budget 24 by 7 automatically. Because we know in today's days like AI ka time hai and everything we are trying to automate, right? So can we automate our budget planning as well? And so that like we don't miss our any type of opportunity. Like we know जैसे अभी BSD सेल थी, so traffic was very high. और वहां पे अगर हमारा बजट खत्म हो जा रहा था, इवन दो माई कैंपेन्स वर गेटिंग वेरी बेटर आरओआई, दे आर गिविंग अ गुड आरओआई, बट मेरा बजट ही इतना कम था कि वो हमारा जब पीक टाइम आना था ट्रैफिक का, एट दैट टाइम माई ओवरऑल बजट गेट एग्जॉस्टेड. सो ऐसे हम पीक पीरियड्स को मिस आउट ना करें एंड अपने ओवरऑल वर्किंग को हम कैसे ऑटोमेट करें, अपने बजट को कैंपेन्स के बजट को कैसे ऑटोमेट करें. फॉर ऑल दीज थिंग्स, सॉल्विंग ऑल दीज थिंग्स, वी हैव लॉन्च बजट रूल. ठीक है? दिस कैन सॉल्व कि हम मल्टीपल कैंपेन्स को एक साथ कैसे इजिली मैनेज कर पाए. इवन जैसे कई बार होता है लेट नाइट में वी लॉग इन ऑन आवर पोर्टल, एडवर्टीजमेंट पोर्टल, एंड वहां पे हम देखते हैं हमारा बजट एग्जॉस्ट है, वी नो दैट दिस इज अ हाई ट्रैफिक टाइम, तो हम वहाँ बजट ऐड करते हैं. सो हाउ वी कैन मिनिमाइज दिस और ऑटोमेट दिस प्रोसेस एज वेल. सिमिलरली जहाँ पे भी हमें लगता है कि दिस कैंपेन इज गिविंग अस अ वेरी गुड परफॉर्मेंस, हम वहां पे कैसे उस चीज को ऑटोमेट कर सकें. इफ इट इज गिविंग अस अ वेरी गुड परफॉर्मेंस, प्लीज एड एडिशनल बजट टू दिस कैंपेन. So all these things will be solved by this rule. Initially, we will start with the theoretical part and then I will move to the practical as well on the portal only. कि कैसे आप लोग एक्चुअल में उस चीज को अपने कैंपेन्स में एग्जीक्यूट कर सकते हो. So I will show the practical part as well and we'll start with the overall theoretical part. ठीक है? So there are two type of budget rule specifically यहाँ पे. The first one is the schedule rule. Second one is the performance rule. Schedule rule नाम से समझ में आ रहा है that you can schedule the budget, you can schedule for a timing, like आप डे लेवल पे भी उसको कर सकते हैं या फिर ऑन अ स्पेसिफिक डे ऑफ अ वीक. लाइक वी वांट कि हमें अपने बजट को सैटरडे संडे, बिकॉज इट्स अ वीकेंड टाइम, वहां पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है, तो मैं चाहता हूँ कि फॉर दोज 2 days मेरा बजट इतना ज्यादा होना चाहिए, 20-30% ज्यादा होना चाहिए. आइदर सेकेंड अप्रोच हमारा ये हो सकता है कि देयर इज अ सेल पीरियड. फॉर एग्जाम्पल 8 मई से 15 या 17 मई तक हमारा बीएसडी सेल चलेगा. तो फॉर दैट ड्यूरेशन, दैट सेल पीरियड का ड्यूरेशन, आई वांट कि मेरा बजट ओवरऑल 20% या 30% से इंक्रीज हो जाए फॉर दीज कैंपेन्स. तो वी कैन डू ऑल दीज थिंग्स विद द हेल्प ऑफ शेड्यूलिंग रूल. ठीक है? there are some like core benefit again which I explained you. There are like you don't need to log in on weekends, that because most of the time Saturday or at least Sunday को तो हमारे POCs हैं, अगर उनकी छुट्टी होती है, इवन नो वन इज वर्किंग ऑन संडेज, राइट. बट अगर हमारा बजट वहां पे खत्म हो गया तो क्या मतलब हमारा सेल वी कैन नॉट ड्रॉप बिकॉज सैटरडे संडे इज अ वेरी हाई टाइम.
for the platform, right? A lot of traffic come there at that point, at that time, right? तो हम लोग क्या कर सकते हैं, we can plan our budget for those weekends on Friday, या फिर उसके पहले भी हम अभी एक रूल सेट कर सकते हैं कि फॉर ईच वीकेंड सैटरडे एंड संडे आप 200 रुपए से मेरा बजट बढ़ा देना, या फिर जैसे एग्जांपल हमने लिया है कि वी कैन इंक्रीज द बजट बाय 20%. सो इफ our budget is normal budget is 1000 rupees for a campaign, we will set a rule that on weekends increase it by 20%, so it will increase to 1200 rupees. Okay. Sorry, I guess my screen is visible now. Yeah, now it's visible. If you can confirm. Right? Now it's visible. Okay. Okay. I guess I missed some part. Uh, so these were the core benefits. ठीक है. Now comes the apply part of this. So about to application definitely हर एक जगह applicable नहीं है. ठीक है. There are some budget rule. ठीक है. So where we can वाला जो campaigns होते हैं and that too on the daily budget वाले things में. We cannot use this in the total budget campaigns or the smart ROI campaigns. We can use this to the PLA campaigns, वो भी daily budget के if we apply. So for example, कोई भी daily budget का हमारा campaign है, वहां पे हम उसका 1000 रुपए का daily budget डालते हैं, 1000 rupees का daily budget. We can add a rule that you can increase this budget by 20% on those weekend or on during this period, whatever you say. कैसे आप एड ऑन करोगे. नाउ कम्स द सेकेंड पार्ट ऑफ द रूल, दैट इज द परफॉर्मेंस रूल. तो एक शेड्यूलिंग होगा जहां पे हम टाइमिंग सेट कर सकते हैं कि किस टाइम पे व्हेन वी वांट टू इंक्रीज आवर बजट स्पेसिफिकली. Rule is specifically that if I am getting this much ROI or greater than this ROI, then increase my budget with this percentage or this amount. तो लेट्स से एग्जांपल, मेरी आरओआई की एक्सपेक्टेशन रहती है किसी कैंपेन से कि ये 7-8 की आरओआई मेरे को मिल जाए. सो इफ आई एम एक्सपेक्टिंग कि 7 की आरओआई अगर मुझे मिल जाती है, इट मींस कि माय कैंपेन्स आर परफॉर्मिंग वेल फॉर मी. तो वी कैन सेट अ रूल कि इफ माय कैंपेन इज गिविंग मी 7 का और उस टाइम पे बजट मेट हो जाता है, तो आप मेरा बजट 200 रुपए से बढ़ा देना, सॉरी 500 रुपीज से बढ़ा देना, या फिर 20% से बढ़ा देना, वट एवर यू कैन चूज. ठीक है. बिकॉज नो वन वॉन्ट्स कि मेरा अच्छा जो हाई परफॉर्मिंग कैंपेन्स हैं पे बन रहे Anupam, हैं, your voice is not audible. मतलब करते हैं वो ऑटोमेटिकली स्टॉप ना हो जाए. इट विल हेल्प यू. Anupam, नाउ इट्स ऑडिबल. Anupam, we had lost you for almost like now 2 to 5 minutes. अच्छा 2 to 5 minutes क्या? Yeah, 2 to 3 minutes at least. ठीक है. परफॉर्मेंस रूल से स्टार्ट करते हैं फिर. Yes, 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 please. Sorry guys, maybe there are some network. So performance rule, let me explain again. So performance rule जैसे हमने we have learned on the schedule rule, वहां पे we can schedule my campaigns as accordingly कि हम इस ड्यूरेशन में या फिर इस डेट्स पे मैं चाहता हूँ कि मेरा बजट इस परसेंटेज से या इतने अमाउंट से बढ़ जाए. So we can do that in the scheduling part. But when it comes the performance part, performance rule में we can do the budget rules as per the performance of that campaign. So let's say अगर मेरा कोई campaign है, if it is giving a ROI of 5 का, so I will say कि I am okay, मतलब 5 का is my expectation. If I get
ROI of 5, then that campaign is performing well for me, right? And if it is performing well for me, then please increase my budget to 500. आई डोंट वांट कि मेरा कोई अच्छा परफॉर्मिंग कैंपेन है वो बजट मैट होकर के खत्म हो जाए ड्यूरिंग द पीक ट्रैफिक टाइम. सो आई वुड ऑलवेज वांट, इफ देयर इज अ गुड परफॉर्मिंग कैंपेन और उसका बजट खत्म होने वाला रहता है, तो आप सामने से पैसा ऐड ऑन कर दो. एंड इफ इट इज ऑटोमेटिक, तो उससे बेस्ट चीज किसी भी सेलर के लिए नहीं हो सकता, राइट? जो भी हमारे बेस्ट परफॉर्मिंग कैंपेन्स हो. सो आई वुड वांट कि मेरा शाम को बजट खत्म हो जाता है ज्यादातर सेलर्स का. 500 का हमने बजट डाला है किसी कैंपेन में, इवन दो बहुत अच्छा आरओआई दे रहा है, बट शाम तक मेरा वो बजट खत्म हो जाता है 500 रुपए. और शाम के बाद जैसे 6-7 बजे के बाद देर इज अ हाई ट्रैफिक टाइम. तो अब जब ट्रैफिक आ रहा है उस समय मेरे कैंपेन्स आउट ऑफ बजट हैं. तो जहां तक मैं जितना अच्छा सेल ग्रैब कर सकता था उस टाइम पे, इट इज लिमिटिंग माई सेल्स. तो कहीं ना कहीं मैं अगर वहां पे प्रेजेंट नहीं हूँ, इट मीन सम अदर पर्सन आर देयर, अदर कॉम्पिटिटर्स और अदर प्लेयर्स आर देयर ऑन द प्लेटफॉर्म जो कि हमारे जीएमवी को ले रहे हैं. सो एज अ सेलर हमारा प्लान होना चाहिए कि ड्यूरिंग पीक टाइम पे भी, पीक ट्रैफिक टाइम पे भी, वी आर ऑल्सो प्रेजेंट ऑन द प्लेटफॉर्म विद आर एडवर्टीजमेंट. सो इफ देयर आर एनी कैंपेन्स विच आर परफॉर्मिंग वेल, तो हम वहां पे ये रूल एड ऑन करेंगे कि अगर ये 7 या 10 के ऊपर जो भी आपकी एक्सपेक्टेड आरओआई है, जो भी आपको लगता है कि इट इज गुड फॉर योर कैंपेन, इतना आपको आरओआई आ रहा है तो इट इज परफॉर्मिंग वेल फॉर यू. इफ देयर इज एनी सच केस, तो वी शुड ऑलवेज टेक इट अहेड. वहां पे हम रूल लगाएंगे कि यस, इफ इट इज परफॉर्मिंग वेल, प्लीज इंक्रीज द बजट बाय दिस मच अमाउंट या दिस मच परसेंटेज. नाउ कम्स द नेक्स्ट. Now comes the next point. So basically, let's understand the core benefits, so which we had discussed also. So we'll take an example. If there we have a campaign with the current budget of 1,000 rupees and ROI benchmark is 7 or above, then we can give a rule that increase the budget by 20%. अगर हमारा ये चीज मेट करता है, ROI 7 के बेंचमार्क के ऊपर आता है, then increase my budget by 20%. एंड व्हाट हैपेंड व्हेन, जब मेरा बजट खत्म होने वाला रहेगा, माई बजट विल ऑटोमेटिक 1,200 रुपीज, अगर हमारा आरओआई 7 के ऊपर चल रहा है. ओके, व्हाट आर द एप्लीकेशंस, कहाँ कहाँ पे ये अप्लाई हम कर पाएंगे? सो वी विल एबल टू अप्लाई दिस. जैसे हमने शेड्यूल वाले में देखा, केवल डेली बजट की कैंपेन्स, और वो भी केवल सीपीसी में, जहां हम इसको अप्लाई कर सकते हैं. बट व्हेन इट कम्स द परफॉर्मेंस बजट रूल, वहां पे वी विल एबल टू डू दिस एप्लीकेशन ऑन द सीपीसी वाले कैंपेन्स एज वेल एज ऑन स्मार्ट आरओआई के कैंपेन्स. दोनों जगहों पे हम कर सकते हैं. सिमिलरली डेली बजट के कैंपेन्स और टोटल बजट, दोनों जगहों पे हम ये रूल एप्लीकेबल कर सकते हैं. वहां पे हम ये चीज लगा सकते हैं हमारे कैंपेन्स में. वी विल शो, मतलब दोनों कैंपेन्स में एक बार बनाऊंगा. आई विल फर्स्ट क्रिएट अ सीपीसी कैंपेन ऑफ पीएलए, एंड देन आई विल ऑल्सो क्रिएट अ स्मार्ट आरओआई कैंपेन, एंड आई विल शो यू गाइस कि कैसे वो एक्चुअली परफॉर्म कर रहे हैं, कैसे वो मूव कर रहे हैं. ठीक है. सो दिस इज द बेसिक ओवरऑल समरी, यू कैन से दोनों का कैसे रहेगा. तो इफ आई टॉक अबाउट टू शेड्यूल में, जो कि टाइम बेस्ड होता है, तो वहां पे वी कैन चेंज बजट बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक डेट, टाइम, या फिर शेड्यूल. लाइक वीकेंड्स हो गया, या फिर ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक सेल इवेंट, वी कैन शेड्यूल माई बजट. अदर और परफॉर्मेंस रूल में वी कैन लाइक डू द स्पेसिफिक आरओआई के बेस पे हम अपने बजट को चेंजेस कर सकते हैं. सिमिलरली जो शेड्यूल रूल है, वहां पे हम डे या वीक का रेंज डाल सकते हैं, डे ऑफ द वीक बता सकते हैं, सैटरडे संडे, या फिर एक रेंज दे सकते हैं. एंड वहां पे हम अपने बजट को एब्सोल्यूट या परसेंटेज में दोनों जगहों पे इंक्रीज कर सकते हैं. आइदर हम 20% इंक्रीज करने का एक ट्रिगर दे सकते हैं उसको, या फिर 500 रुपीज, 1,000 रुपीज इंक्रीज करने का भी ट्रिगर दे सकते हैं. अमाउंट में भी दे सकते हैं, परसेंटेज में भी दे सकते हैं. एंड दिस इज एप्लीकेबल ऑन बोथ बोथ टाइप ऑफ प्रोडक्ट. ठीक है. शेड्यूल रूल में जैसे हमने देखा, शेड्यूल रूल में जो एप्लीकेशन है, दैट इज करेंटली ओनली लिमिटेड टू डेली बजट वाले कैंपेन्स. वी कैन नॉट डू दिस ऑन द टोटल बजट कैंपेन और द स्मार्ट आरओआई. वर्सेस जो परफॉर्मेंस रूल है, वो हम दोनों जगहों पे एप्लीकेबल है. हम डेली बजट और टोटल बजट दोनों जगह के कैंपेन्स में हम उसको रन कर सकते हैं. ओके.
शेड्यूल रूल में वी कैन गिव द परसेंटेज कि इस डेज पे इतने परसेंटेज आप इंक्रीज कर सकते हो, इस ड्यूरेशन में आप इतने परसेंट इंक्रीज कर सकते हो। वर्सेस परफॉर्मेंस रूल में वी कैन गिव अ आरओआई या परफॉर्मेंस बेस्ड थिंग कि इफ वी आर गेटिंग आरओआई ऑफ मोर देन 7 देन इंक्रीज माई बजट बाई 20% और 30% समथिंग। ठीक है। Definitely, this will help us in like no manual logins during the weekends and even the when my budget get exhausted during the peak time. So this will help us in avoiding all those things. So simple and straightforward rule creation. So there are multiple options when you will start creating the rule. ठीक है, वहां पे आपको कुछ प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स भी मिलेंगे जो कि हमारे साइड से बैकएंड से ऑलरेडी सेटअप किए जाएंगे आप लोगों के लिए, और मतलब रिकमेंडेड रहेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मे बीएसडी बूस्टर रूल विल बी एप्लीकेबल। सो आप उसको देख सकते हो कि अगर हम वहां पे इतना कर रहे हैं तो हम अगर मेरा नॉर्मल टाइम पे 1,000 रुपए का स्पेंड है तो वी विल वांट कि ड्यूरिंग मे बीएसडी सेल हम 1.5 गुना स्पेंड करें, तो 1.5x we can share a rule like increase the budget by 50%. So we can use all these डिफाइंड रूल्स को भी हम कर सकते हैं यूज, या फिर हम यहाँ पे कस्टम रूल भी क्रिएट कर सकते हैं अपने लिए। हमारे पास कस्टम रूल भी क्रिएट करने का ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा हमें। बट मैक्सिमम किसी एक कैंपेन में हम 2 ही रूल क्रिएट कर पाएंगे, एक बजट के लिए जो कि परफॉर्मेंस बेस्ड वाला होगा, और दूसरा शेड्यूलिंग के लिए कि इस दिन करना है ऐसा। तो ऐसा नहीं कि मल्टीपल शेड्यूलिंग कर पाए कि ऐसा भी कर लो ऐसा भी कर लो। सो मैक्सिमम अभी जो लिमिट है हमारे, मैक्सिमम 2 रूल्स हम अप्लाई कर सकते हैं ऑन वन कैंपेन। लेट मी शो यू अभी स्टेप बाय स्टेप, लेट मी डू एवरीथिंग। पूरा कैंपेन क्रिएट करते हैं। फर्स्ट वी विल क्रिएट द सीपीसी का कैंपेन एंड विल शो यू हाउ वी विल अप्लाई द बजट रूल देयर, एंड देन आई विल क्रिएट अ स्मार्ट आरओआई का कैंपेन एंड आई विल शो यू हाउ वी कैन डू द बजट रूल देयर। ठीक है, लेट मी शेयर माई स्क्रीन अगेन। आई होप आई वॉज ऑडिबल प्रॉपरली टिल नाउ। Yes, पंकज इफ Abhishek. यू कैन। ठीक है। माई स्क्रीन इज विजिबल। Yes, yes, it's visible. ठीक है। So guys, let's create a campaign एक बार, and let's see practically कि how we will able to manage the budget rule on our platform. So when I click on the create campaign, I will create, as I said कि ये पूरे जो भी rules हैं ये only applicable on PLA campaigns. These are not yet like applicable on the PCA campaigns. So I will start creating a PLA campaigns on the seller portal. ठीक है। Solution। ठीक है। So let me start creating this campaign. We will be creating a CPC campaign. Okay.
यहाँ पे हमने एक डेली बजट का रूल लगाया है, एंड वी विल ऐड बजट ऑफ लेट्स से 10,000 या 1,000 व्हाटएवर. Anupam, your voice is cracking a bit. Could you please Okay. check with your mic? Just give me. It's better now? Yeah, way better. ठीक है. Okay. So I am creating a CPC campaign now. I have put a daily budget of 1,000 rupees. ठीक है. Below that आपको दिख जाएगा यहाँ पे add budget rule option. एंड एज आई सेड सीपीसी के कैंपेन्स में जो भी अगर हम डेली बजट के कैंपेन्स लगाएंगे, देयर वी विल गेट बोथ ऑप्शन. परफॉर्मेंस बेस्ड वाला भी वी विल गेट एंड द शेड्यूल बेस्ड वाला भी वी विल गेट. सो यहाँ पे आपको दोनों ऑप्शंस मिल जाएंगे. लेट्स स्टार्ट विद द शेड्यूल बेस. शेड्यूल बेस में एज आई सेड हमारे पास ऑप्शंस रहेंगे कि इस ड्यूरेशन में अगर हम कुछ करना चाहते हैं, देयर विल बी प्री डिफाइंड रूल्स ऑलरेडी जो कि हमको ऑप्शंस में दिख जाएंगे. कुछ बैकएंड्स ऑलरेडी क्रिएटेड होते हैं. प्लस अगर आपने कभी कोई यूज किया है, कोई रूल बनाया है, तो यू विल ऑल्सो सी दोज रूल्स सजेशन में. अगर आपने किसी दूसरे कैंपेन के लिए कोई रूल बनाया है, तो जब आप किसी दूसरा नए कैंपेन को बना रहे होगे, तो वहां पे भी आपके सजेशन में आपके पुराने रूल्स भी आएंगे कि इफ यू वांट तो आप उसको ही रेप्लिकेट यहाँ पे कर सकते हो. ठीक है. और कुछ जो है बैकएंड से बने हुए रूल भी रहेंगे जो कि रिकमेंडेड रहेंगे. सो आप उस रूल के थ्रू भी जा सकते हो, या फिर आप एक अपना खुद का रूल बना सकते हो. तो लेट मी क्रिएट अ न्यू रूल फॉर दिस स्पेसिफिक कैंपेन. तो अगर मैं शेड्यूल का एक रूल बना रहा हूं, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि डेली बजट के कैंपेन्स में मेरा एक रेंज ले लो. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी एक सेल पीरियड स्टार्ट हो रही है 15 तारीख से 17 तारीख तक, जो कि बीएसडी सेल एक्सटेंडेड है. सो आई वांट कि इस ड्यूरेशन में मेरा जो एक्शन आपको लेना है कि मेरा बजट है इंक्रीज कर देना बाई 30% से. मैंने बोल दिया, ट्रिगर दे दिया, एक रूल क्रिएट कर दिया इस कैंपेन के लिए कि 15 तो 17 तारीख के लिए, 17 मई तक के लिए मेरे बजट को 30% से इंक्रीज कर देना. ओके. या फिर परसेंटेज की जगह मैं अमाउंट भी डाल सकता हूं कि मेरा बजट आप जो है 3,000 रुपए से बढ़ा देना. दोनों एक्शन हम जो है करवा सकते हैं, दोनों रूल्स हम बना सकते हैं अपने कैंपेन के लिए. सिमिलरली जो नॉर्मल डेज में अगर हमारा होता है, कोई बीएयू मंथ है हमारा या बीएयू टाइम चल रहा है, तो वहां पे हम एक स्पेसिफिक डेज के लिए भी कर सकते हैं दैट ऑन दीज डेज. तो मेजरली होता है ऐसे सैटरडे एंड संडे, इन दोनों दिनों के लिए हमने सेलेक्ट कर लिया वीकेंड को, इंक्रीज माई बजट बाई 3,000 रुपीज. या सेम परसेंटेज में अगर मैं जाऊं, सो इंक्रीज माई बजट बाई 30% से. सो वी कैन सेट दिस रूल ऑन द शेड्यूलिंग वाले पार्ट. ठीक है. सेम इसमें एज आई सेड कि हमें दोनों ऑप्शन मिलेंगे, तो आई विल शेड्यूल ऑल्सो अ बजट. उसके अलावा मैं यहाँ पे परफॉर्मेंस बेस्ड रूल भी लगा सकता हूँ. उसमें भी हमारे पास ऑप्शंस आएंगे, यहाँ पे रिकमेंडेशन आएगा, बट वी कैन क्रिएट आवर ओन रूल एज वेल. सो इफ आई गो टू क्रिएट रूल, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आएगा कि मेरा अगर आरओआई ग्रेटर देन वॉट एवर हम लिखते हैं यहाँ पे, लेट्स से अगर मेरा एवरेज आरओआई 7 का आता है, 7 का आरओआई आता है एवरेज मेरा, तो आई विल से कि अगर मेरे को 7 से ऊपर मिलता है, तो प्लीज इंक्रीज बाय बजट बाय सम परसेंटेज. तो मैं यहाँ पे आरओआई लिखता हूँ, आरओआई या 7 की. ठीक है. अगर मेरे 7 से ज्यादा की आरओआई आती है, तो इंक्रीज माई बजट बाई 20%. और ऑन द सेम लाइन आई कैन राइट इंक्रीज माई बजट बाई 2,000 रुपीज. तो अमाउंट भी डाल सकते हैं हम, और हम परसेंटेज वाइज भी डाल सकते हैं. मिनिमम 300 रुपीज से मैक्सिमम 10,000 रुपीज तक हम इसमें डाल सकते हैं. इसमें हमारे पास एक और अच्छा ऑप्शन होता है. ऐसा नहीं है कि अगर आपने एक बार ये रूल सेट कर दिया तो अब वो कंटिन्यूअस आगे वाले बजट पे ही जाएगा. आपको जस्ट यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन दिखेगा, हम यहाँ पे इसको भी टिक मार्क लगा सकते हैं कि रिवर्ट टू ओरिजिनल कैंपेन बजट बाय नेक्स्ट डे. हो सकता है मेरे को आज बहुत अच्छा आरओआई दिया, तो आज मेरा बजट बढ़ा दो, बट कल जैसे ही वापस आएगा, स्टार्ट होगा, तो मेरे ओरिजिनल बजट से आप स्टार्ट करो. सो दिस इज ऑल्सो अ ऑप्शन वी विल गेट इन आवर परफॉर्मेंस बजट रूल. ठीक है. सो दिस वाज द सीपीसी का कैंपेन व्हेन वी वर क्रिएटिंग. यहाँ पे हमें दोनों ऑप्शन मिल रहे थे, राइट.
नाउ लेट्स क्रिएट स्मार्ट आरओआई का कैंपेन। अगर मैं स्मार्ट आरओआई का कैंपेन क्रिएट करता तो उसमें क्या हमारे पास ऑप्शन आता? तो एज वी नो, स्मार्ट आरओआई में देयर इज नो ऑप्शन ऑफ डेली बजट का थिंग, देयर इज ओनली ऑप्शन ऑफ टोटल बजट। सो लेट्स से आई हैव एडेड 10,000 का बजट, टोटल बजट फॉर अ स्मार्ट आरओआई कैंपेन। उसके नीचे मुझे बजट रूल दिखेगा। आई विल क्लिक ऑन द एड बजट रूल। यहाँ पे मेरे को केवल एक ऑप्शन दिखेगा, दैट इज द परफॉर्मेंस बेस्ड रूल। वी विल नॉट गेट द शेड्यूल बेस्ड रूल ऑप्शन इन स्मार्ट आरओआई। परफॉर्मेंस बेस्ड रूल, अगेन एज आई सेड, आई विल गो ऑन क्रिएट अ न्यू रूल। यहाँ पे हम डाल सकते हैं, इफ आई एम गेटिंग आरओआई ऑफ 9, देन इंक्रीज बाय बजट बाय 20%, एंड दिस विल हैपन। सो एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा भी है, अगर इफ योर बजट इज 10,000, इट विल बिकम 12,000 अगर कंडीशन फॉलो होता है तो। बट बिकॉज इट्स अ टोटल बजट कैंपेन, देयर विल बी नो ऑप्शन कि हम वापस इसको रिवर्ट कर पाए। देखो डेली बजट में मुझे डेली स्पेंड करना 1,000 रुपीज, तो डेफिनेटली आई डोंट वांट कि 1,200 हो जाए, 1,200 हो गया तो 1,200 कंटिन्यू करें। बट टोटल बजट है तो ऑब्वियसली वो स्पेंड हो चुका है, इसलिए देयर इज नो ऑप्शन ऑफ रिवर्ट वहां पे करने का। ठीक है। सो दिस इज अ बेसिक रूल, बट ये बहुत ज्यादा हमारे ओवरऑल वर्क को सॉल्व कर सकता है। नाउ आई विल मूव टू आर पीपीटी अगेन। So we have shown the demo. Now एक बार हम लोग चेक करेंगे व्हाट आर द कॉमन क्वेश्चन। मे बी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके माइंड में आ रहे होंगे, यू मस्ट, आप लोग प्लान कर रहे होगे टू आस्क दोस क्वेश्चन। बट बिफोर दैट आई हैव लाइक सम क्यू एंड ए ऑप्शंस आल्सो। मे बी बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको यहाँ से मिल जाएंगे, एंड इवन अगर स्टिल देयर आर सम क्वेश्चंस, तो यू कैन आस्क आफ्टर दिस। ओके। So there is a question like how many rules can be applied to a campaign? So as I said also earlier, that there are maximum two rules per campaign we can apply. One is the performance rule, that is मतलब majorly ROI के ऊपर कि 10 की ROI आ रही है तो increase my budget by this percentage. And the second is the एक schedule का rule लगा सकते हैं, maximum दो rule ही लगा सकते हैं on one campaign. Second question is like how does the budget rule behave for campaigns? So budget rule for daily budget campaign, advertiser can choose like permanent increase भी आप choose कर सकते हो, और you can choose a revert वाला option कि अच्छा आज मेरा 200 रुपए से बढ़ा देना बजट, बट कल वापस से इट स्टार्ट विद 1,000 का डेली बजट ओनली। आई डोंट वांट कि वो कंटिन्यू बढ़ता ही रहे। तो यू हैव बोथ ऑप्शन। अगर आप टिक मार्क लगाते हो तो वो रिवर्ट आ जाएगा, वापस से सेम बजट पे स्टार्ट करेगा नेक्स्ट डे। अगर आप चाहते हो कि नहीं मेरा अगर बजट बढ़ जा रहा है तो उसी बजट को कंटिन्यू करो, तो यू कैन गो अहेड विद दैट एज वेल। बट ऑन एज आई सेड टोटल बजट में दिस ऑप्शन विल नॉट बी देयर। आप एक बार पैसे बढ़ा देते हो तो ऑब्वियसली उसके ऊपर और खर्चा हो नहीं जाएगा, क्योंकि वो स्पेंड हो चुका है ऑलरेडी, बिकॉज टोटल बजट का कैंपेन 10,000 अगर मेरा स्पेंड हो चुका है, आई कैन नॉट माइनस इट। तो दिस इज द ऑप्शन इन द टोटल बजट। बट वी हैव दैट मतलब ऑप्शन, अपॉर्चुनिटी इन द डेली बजट कि अगर हम किसी एक दिन पे बढ़ा रहे हैं, इट डजेंट मीन कि रोज का रोज वो मेरा बढ़ा ही रहेगा, एक्स्ट्रा ही रहेगा। सेकेंड वन इज द अगला क्वेश्चन जो आता है, व्हाट ड्यूरेशन इज यूज फॉर आरओआई कैलकुलेशन? अगर मैं आरओआई का एक परफॉर्मेंस बेस्ड रोल में डालता हूं कि अगर मेरी आरओआई 7 से ज्यादा की आती है, 7 से ज्यादा की आरओआई आती है, देन मेरा बजट 30% से इंक्रीज कर देना। तो दैट 7 का कैलकुलेशन आरओआई का वो कैसे हम लेंगे? सो फॉर टोटल बजट की कैंपेन्स वी विल टेक द इंटायर कैंपेन का ड्यूरेशन। फॉर एग्जाम्पल मे भी हो सकता है वो 10 मार्च से चल रहा हो, आज भी वो लाइव है, मई में भी वो लाइव है, तो आई विल टेक द इंटायर ड्यूरेशन, उसका जो भी एवरेज आरओआई आया है, आई विल टेक दैट आरओआई एज अ बेंचमार्क। ठीक है। फॉर डेली बजट कैंपेन्स वी विल टेक लास्ट 7 डेज का परफॉर्मेंस। सो फॉर एग्जाम्पल आज 15th है, तो आई विल टेक 8 मई से 15th मई तक ओवरऑल कैसा परफॉर्मेंस रहा है, कितनी की आरओआई आई है। तो जैसी आरओआई है उसके हिसाब से हम लोग रिजल्ट डिक्रीज करेंगे। अगला पॉइंट है, कैन एडवर्टाइजर्स रीयूज एग्जिस्टिंग रूल्स? यस। सो प्रीवियसली जैसे मैंने भी बताया, व्हेन यू स्टार्ट क्रिएटिंग द रूल, यू विल स्टार्ट सीइंग इन द सजेशन वाले ऑप्शंस में आपको पुराने क्रिएटेड रूल्स भी आने लगेंगे। इफ यू हैव क्रिएटेड एनी टाइप ऑफ रूल, बजट रूल,
इन एनी ऑफ द कैंपेन, तो आप जब कोई दूसरा कैंपेन बना रहे होगे वहां पे रूल लगाने जाओगे, यू विल एबल टू सी एज अ रिकमेंडेशन और सजेशन जो आपने वहां पे भी लगाया था रूल, वो ऑप्शन आएगा आपको। सो यू कैन जस्ट क्लिक दैट रूल एंड अप्लाई द सेम रूल यहाँ पर दूसरे नए कैंपेन में भी आप कर सकते हो। ठीक है। Can advertiser remove a rule after applying it? Definitely, you can replace या फिर you can remove the rule completely from your campaign as well. अगर आपको लग रहा है कि वो सही से नहीं काम कर रहा है, के लिए you can remove it as well. अगर आपको लग रहा है कि if it is working fine तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है। बस एक सेकंड। Next question was like, can advertiser manually change campaign budget if rule is active? So कई बार होता है कि अगर मेरे को बजट चेंज करना है, राइट नाउ केवल 10,000 का बजट है, मेरे को बजट इंक्रीज करना है, तो अगर मेरे रूल भी एप्लीकेबल है कि मेरी आरओआई इतनी आएगी तो प्लीज इंक्रीज बाय बजट बाय दिस परसेंट, अगर कोई रूल लगा है तो क्या उस ड्यूरेशन में भी मैं मैनुअली अपना बजट चेंज कर सकता हूँ? 10,000 का बजट है, कैन आई चेंज इट टू 15,000? तो यस, वी कैन डू द चेंजेस ऑफ द बजट एज वेल, इवन द रूल अगर वहां पे लगा हुआ है तो भी हम कर सकते हैं। तो हम 15,000 का अगर बजट चेंज कर सकते हैं, वहां पे हम विल सी की इफ इट इज वर्किंग फाइन, अगर हमें रिजल्ट आ रहा है तो हमारा अगर रूल ट्रिगर होगा, इट विल गेट ऑटोमेटिकली एक्टिवेटेड वहां। ठीक है। हाउ कैन एडवर्टाइजर ट्रैक बजट चेंजेस मेड बाय रूल्स? सो अगर कोई भी रूल्स की वजह से आपके बजट में चेंजेस हो रहे हैं, सो आप उसको अपने ऑडिट सेक्शन में जाकर चेक कर सकते हो कि किस वजह से वो बजट आपका इंक्रीज हुआ है, रूल से हुआ है या आपने किया है, आपकी टीम ने किया है। वी कैन चेक दैट इन द ऑडिट सेक्शन इंटायरली। ठीक है। बाकी यू विल गाइस हैविंग द एक्सेस ऑफ द फ्लिपकार्ट एडवर्टाइजमेंट पोर्टल, वहां पे यू कैन गो ऑन द ग्रुप विद एड्स एकेडमी एंड यू कैन लर्न मोर अबाउट द फ्लिपकार्ट, एंड वहां पे आप सर्टिफिकेट कोर्सेज भी अपने कर सकते हो। ऑल थिंग्स आर लाइव नाउ। थैंक यू सो मच for the session. Now forum is open for the Q&A. Just let me know if you have any questions. Hi Anupam, Hi, you got some questions? yeah, I'm checking that only. Okay. Can we get email as a PPT or PDF? Sellers, you can ask the questions if you have any. If you have any doubts, you can just text out at our chatbot and or else in the Q&A tab as well, whichever is more feasible for you. We can accordingly pick it up and we'll answer it. So there is a question from Rat Cartel. Ads analytics data is reflecting with delay of nearly 4 hours after the campaign budget gets exhausted. In such a situation, how will the system accurately apply automated budget rule or optimization logic when real-time performance data is not available for processing? So Red Cutter, as I said now, for the total budget campaigns, we will for the performance based rule, we will take the entire campaign duration का performance. So if campaign was started in 5th March and it's continued till now, so we will take performance of overall that campaign, and उसके हिसाब का whatever ROI they have received in that campaign, then the budget rule will get triggered. Similarly, for a daily budget rule, we will check the campaign's performance for last 7 days, how it has performed for last 7 days, and then we will trigger the rule, budget rule. So if we are getting ROI of 7 का in last 7 days, then and हमारा जो rule हमने लगाया है, that is also if
I'm getting ROI of more than 7, then increase my budget by 20%, then only that rule will get triggered. So duration is not, so we know that there are some delay uh, for the data getting matured. So that's why we take this duration for the calculation of ROI. How we will get to know budget rule is applied or not. So when you edit your campaign, you will able to see that if there is any budget rule applied on that campaign or not. You can simply check that. Anupam, Yeah. I think you have some questions in the Q&A tab. Okay. Yes, एक सारांश का है, if ROI is achieved on last 7 days, then will it increase the budget? Yes, it is not just 1 day ka ROI which we are taking. This is the average of last 7 days how it is performing. So अगर आप अपनी कैंपेन मैनेजर में जाओगे, किसी कैंपेन के अगेंस्ट में आप लास्ट 7 डे का ड्यूरेशन सेलेक्ट करोगे, देन यू विल एबल टू फाइंड कि आपका कितना आरओआई आ रहा है, और इफ दैट आरओआई इज मीटिंग योर ट्रिगर नंबर जो आपने बजट रूल के लिए दिया हुआ है, देन इट विल गेट ट्रिगर, जो आपका रूल है इट विल गेट ट्रिगर. इट इज नॉट कि आज की आरओआई आ गई तो मीट होगा कि नहीं. दिस इज द एवरेज मेरा मेंटेन होना चाहिए फॉर द लास्ट 7 डेज. अगर मेरा एवरेज मेंटेन नहीं हो रहा है तो भी इट विल नॉट गेट ट्रिगर. ऐसा. मैं ऐड चलाना चाहता हूँ, ऐड मनी का ऑप्शन कैसे. सो अगर असगर अली ना, सो मेजरली हमारा अभी एएनपीएल स्टार्ट है, एडवर्टाइज नाउ पे लेटर.
बट फॉर न्यू सेलर कई बार होता है उनके पास लिमिट नहीं होती है, तो इसलिए आपको ऐड करना पड़ता है बजट सामने से। अदरवाइज आपके पास एडवर्टाइज नाउ पे लेटर वाला ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें आप पूरे मंथ में अपना जो भी बजट कंज्यूम करते हो वो आप कर सकते हो एज एन एडवांस, और मंथ के एंड में उसके बाद जा करके ओवरऑल पूरा पैसा आपका डिडक्ट होता है फ्रॉम योर सीयूडी बैलेंस डायरेक्टली। सो अभी आपका वो बना नहीं होगा, इसलिए आपको मैनुअली पेमेंट करके एड्स चलानी पड़ेगी। Karthik, please let me know if you have any specific issue. Then I'll like cater it in English only. Karthik, this seminar video will not get posted on YouTube, but definitely there are number of videos uploaded on our Flipkart Advertisement YouTube channel. Most probably the video on the budget rule is also available on that on the YouTube, so Anupam, you're able to find. Yeah, Anupam, actually this webinar will be uploaded on the YouTube this after will some be time. perfect. Can you share the timeline, Pankaj? Then? Yeah, you can consider around like 3 to 5 days. ठीक है, perfect. Yeah, so we'll be uploading it, and later on I'll be able to share you some link. ठीक है, perfect. So Okay. Karthik, you will able to find the video on YouTube in next 3 to 5 days. So Anupam, I think all the questions have been answered. I guess yes. Yeah. So Almost. I think we can wrap up the session. Yeah, Hello. yeah, Pankaj, we can Okay. wrap up. Okay. So sellers, if you have any questions, we'll wait for another 2 minutes. If you have any questions, please ask. We'll be able to answer it. If not, we can wrap up the session. We'll wait for another 2 minutes. If we get any questions, we'll take it up, or else later on we'll wrap it up. Anupam, you got a question in the chat box. Yeah. So if your question, Prashant, if your question is around the keyword wala campaign only, so yes, we have now option that keyword based campaigns are there available. ठीक है. But if you are talking about like किसी campaign के अंदर keyword and can we use the budget rule there?
then definitely वो तो you can do anything in that campaign. You can apply the budget rule as well. And उसके अलावा जो भी whatever optimization part you were doing till now, you can use that all those things on that campaign. ठीक है. But keyword planner करके product which has been launched for most of the seller. Uh, so you can use that as well. Keyword planner. Okay, so we can wrap up the session here, right? Yeah. Yeah. So thank you, Anupam. Thank you so much, sellers, for attending the session. I hope the session was insightful. We'll be similarly coming up with next sessions in next week itself. So I'll be sharing you the video, the invitation of the same. Accordingly, you can register yourself. And till then, see you. You all have a good day. Thank you, Thank you. Anupam. Thank you, everyone. Yeah. Thank you, sellers. You all have a good day.